ओके तो अगर मेरी आवाज आ रही है तो अपना ये करो ऑन, कैमरास ऑन। ओके तो लास्ट वाला थोड़ा सा रह गया। हमने फंक्शन तो ढूंढ ली। वी हैव टू शो दैट इट कन्वर्जेस इन नॉर्म टू दैट fn, the Cauchy sequence that we picked in LP mu. So let me continue straight away. पहले जरा इसको एडमिट करते हैं। कैमरास ऑन करो ना सभी, क्या करो? काश ये पुराना स्क्रीन इस पे रहता, वो ऑप्शन नहीं इसमें है। इसमें ऑप्शन okay. So far what we have we have found that function f belongs to LP, and we also have fx minus fnx is less than equal to twice g of x almost everywhere, and gx raised to p is integrable. इसको एडमिट करना ओके। हाँ, तो इससे ये भी मिलता है हमें, और p greater than equal to 1 फिर से okay. It means that f of x minus fnx raised to p is less than equal to twice gx raised to power p almost everywhere. So this is dominated by क्या बोलते हैं, so by Lebesgue's dominated convergence theorem, and of course limit n approaches infinity, ये भी लिख देते हैं fnx fx raised to p is equal to 0 almost everywhere. So by Lebesgue's dominated, Lebesgue's नहीं है, Lebesgue's dominated convergence theorem, it says that if you have a sequence of integrable functions that is dominated by a Lebesgue integrable function, then you can interchange the limit in the function to the पहले तो ये कि वो function integrable है, यानी ये function integrable है. Furthermore, you can interchange the limit and the integral. That's basically Lebesgue's dominated convergence theorem. यानी 0 is equal to integral limit n approaches infinity fnx minus fx raised to p d mu, यानी मैं लिमिट बाहर निकाल सकता हूँ यहाँ पे, integral fn of x minus fx raised to p d mu, okay, which is nothing but norm of fn, which is nothing but limit n approaches infinity norm of fn minus fp whole raised to p, which implies that norm of fn minus fp converges to 0 as n approaches infinity. That is, fn converges to f which belongs to LP mu, which implies that LP mu is complete. Okay, so that's these are rough. Okay, so we're done. तो हमने रीज-फिशर थ्योरम खत्म कर लिया. Now we come to the dual of LP spaces, and if I remind you from these small LPs, the p Palmer summable sequences, जो p greater than equal to 1 है, हमने किया था L1 का जो dual है, it is isometrically isomorphic to small l infinity, and of course for p greater than 1, LP star is the same as LQ, where 1 by p plus 1 by q is equal to 1.
सो ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन है, थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना है रिगार्डिंग द मेजर. वी कैन L1 हम ऐसे ही दिखाएंगे. L1 म्यू का जो डुअल है इट इज द सेम एज L infinity म्यू. L infinity म्यू लिखना सही नहीं है बट nevertheless हाँ लिख सकते हैं म्यू म्यू, हाँ म्यू लिख सकते हैं, नो इशू. एंड LP एग्जैक्टली यही, थोड़ा सा चेंज है इसमें और इसमें, बट जैसे कि इधर इस केस को हमें अलग से करना पड़ता था ना, यहाँ पर भी वैसा ही है, हमें इस केस को अलग से डील करना पड़ेगा क्योंकि उसकी वजह है यहाँ पे हमारा वो होल्डर्स इनइक्वालिटी चल जाती है. तो यहाँ पे वो चलती है लेकिन नॉट इन दैट वे. ठीक है, थोड़ा सा फर्क है दोनों में क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रल इन्वॉल्व नहीं है या इस नॉर्म में सम इन्वॉल्व नहीं है, इस नॉर्म में सारे सम्स इन्वॉल्व. और इसी तरह से यहाँ पे इस नॉर्म में इंटीग्रल की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें बिल्कुल वही है ऑलमोस्ट. वहां पे सम का वर्ड यूज करो, यहाँ इंटीग्रल का वर्ड यूज करो, बाकी सब कुछ सेम ही है. यानी हम ये दिखाएंगे लेकिन ये थोड़ा लंबा चौड़ा है तो इसको हम आधा आधा, वहां तो हमने एक साथ कर दिया था क्योंकि वो सिंपल था. तो वी आर गोइंग टू डू इट इन पीसेस. ठीक है, यानी वन वे एक तरह से करेंगे, फिर दूसरे वे में मतलब ये सबसेट दिखाएंगे इसका, फिर ये सबसेट दिखाएंगे इसका, इन टू डिफरेंट थ्योरम्स. एनीवे ऑफ कोर्स फिर से यहाँ पे 1/p + 1/q. तो इसका पहला हिस्सा करते हैं जो कि इजियर पार्ट है. और थ्योरम ये है, let 1 be less than equal to p be less than equal to infinity and let q be the conjugate exponent of p. इसको इतना क्यों नहीं इस तरह से, यानी हम लिख सकते थे सीधे ही 1/p + 1/q is equal to 1 and let g belong to LQ mu, and it's q to power integrable function. Then the linear functional defined by f sub g of f is equal to integral f into g d mu for f belonging to LP mu is a bounded linear function, या is bounded या is continuous, is bounded. and इसका जो operator norm है, norm f g is exactly equal to norm g. बेसिकली हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, हम कह रहे हैं कि corresponding to every g right, belonging to LQ mu, there exists f sub g belonging to LP mu star, मतलब such that norm of fg is equal to norm of g. So with the help of any g belonging to LQ, I can define a bounded linear function which preserves the norm. मतलब g और fg का norm same. तो इसका converse क्या होगा? Corresponding to every functional here, I can find a vector here so that it acts in this fashion. So that's the next part. तो मतलब इसका converse एक तरह से. तो पहले हम ये वाला करते हैं. Now it's rather easy. Now we first consider the case when p is equal to infinity and q is equal to 1. क्योंकि अगर q 1 है तो p has to be infinity. अगर q 1 है, so we will have 1/p is equal to 0, then p must be infinity. So अगर मैं देखूं, पहले तो ये कि f is linear. Can you see that fg is linear? मैं वो लिखूं, चलो यहाँ रफ पे लिख देते हैं. Linear, it's a scalar valued map, that's clear, because integral is ultimately a number. So it's a scalar valued map, it's linear because g is fixed, and this would be fg of f1 plus f2 होगा integral f1 plus f2
into G, and since we have got these pointwise operations, yeah, so it would be integral f1g plus integral f2g, d mu nahi lagate, chalo. So which is nothing but fg of f1. Well, it's easy to show that. That's trivial. So fg is linear, तो हम इसको actually दिखाएंगे ये continuous. That's all question. So now let's see. So अगर मैं ये केस लेता हूँ, fg of f in mod is equal to integral fg d mu, which is less than equal to integral, अब मैं दोनों एक साथ करता हूँ, and again जब मैं लिख रहा हूँ mod of f mod of g, तो मेरा मतलब है evaluated at a certain point inside the domain, जहाँ पे मैं integrate कर रहा हूँ. So they are numbers. I am treating them as numbers. तभी तो मैं लिख रहा हूँ ना, mod of fg की जगह मैंने लिखा mod of infinity mod of g. Now this would be less than equal to norm f infinity into g d mu. So that is nothing but norm f infinity into norm g1. So then I can say it's like, what it's like. That is, चलो मैं लिख देता हूँ. fg sub f is less than equal to norm g1 into norm f infinity for all f belonging to L infinity mu. अब L infinity mu का norm तो है ओके, वही जो सबसे बड़ा वैल्यू इसका होता है, बेसिकली उसका सुप्रीमम मतलब लीस्ट ऑफ अबाउट. अब मैंने तुम्हें कहा था कि जो L infinity mu है, इसका मतलब होता है f is bounded except for a set of measure 0, but it is the most मतलब ट्रिवियली तुम्हें पता ही है. अब क्योंकि ये नॉर्मल लीनियर स्पेस है, और नॉर्मल लीनियर स्पेस में अगर मैं दिखा दूं कोई फंक्शनल f of x is less than equal to some k times norm of x for all x belonging to domain, then it must belong to that function. इसका मतलब ये होगा fg clearly belongs to L infinity mu का dual. मैं क्या कर रहा हूँ? Just a minute. तो मुझे f कहाँ belong करना है? f sub g belongs to where? g belongs to LQ. ठीक है. मैंने p को क्या लिया है? f belongs, हाँ बिल्कुल. So it belongs to this dual. fg belongs to this dual. For everything here, there is something inside the dual. For every g which lies, हमने g लिया यहाँ पे. Now इसको लिखेंगे g belongs to L1. Okay. So ठीक है. और दूसरी चीज ये कि ये भी तुम्हें पता है, अगर तुम्हारे पास कोई बाउंडेड लीनियर फंक्शनल हो या बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर हो, it is less than equal to k times norm of x, then norm of t, which is defined as supremum norm x equal to 1 norm of t of x, is also equal to infimum of all k such that norm of tx is less than equal to k times norm of x for all x belonging to x. ये जो यहाँ पे बाउंड्स है k पॉजिटिव, तो अगर इनका इनफिमम ले और वो सुप्रीमम है, वो नॉर्म ऑफ t है, ये हम वहाँ पे करते हैं फंक्शन S1 में, जिसका मतलब होता है ये जो ऑपरेटर नॉर्म है, ये होता है लेस देन इक्वल टू एनी k वेयर दिस इज ट्रू. सो अगर मैं यहाँ पे देखूं, सो ये हमारा k है नंबर, तो operator norm should be less than equal to this number because it is the infimum of such numbers. So and साथ में ये भी मैं लिखता हूँ, जो operator norm है fg का, या is less than equal to norm g1. पहला ऐसा हो गया, लेकिन हमें दिखाना इसका norm बराबर है, but that's also simple. On the other hand, let f be equal to signum of g, sgn of g.
वायर ऑफ कोर्स यहाँ मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इसको अलग से डिफाइन करता है, लेकिन अल्टीमेटली सेम बात है. Signum of gx is equal to 1 if g of x is non-negative. It is equal to -1 if g of x is negative. Okay, so once I've written that, then f is bounded, therefore it is essentially bounded. And it's bounded everywhere, so therefore it is, iska jo measure hai set jahan par ye bounded nahi hai wo 0 hai because that's pi. So it belongs to L infinity mu, and iska jo norm hoga that should be just 1. And what about fg of f? Fg of f is just integral of f into g d mu. That would be equal to integral of signum of g into g d mu. Now what is signum of g? See, g of x, it's 1 if g of x is positive. So it is just actually, this would be just mod of g d mu, which is just norm g1. So norm of fg is equal to supremum over norm, should I write f equal to 1 fg of f, okay, in modulus, of course ये non-negative है यहाँ पे, so it should be, चलो इसका नाम बजाय, चलो अब f ही है तो क्या करेंगे. अब चूंकि मैंने यहाँ पे f रखा, मैं चाहता हूँ इसका कुछ और रखते हैं, doesn't matter. तो supremum is always bigger than equal to fg of f जो हमने ऊपर डिफाइन किया, which is equal to norm g. सुप्रीमम है ना, और ये जो f का नॉर्म है वो 1 है. चलो मैं यहाँ इन्फिनिटी लिख देता हूँ, ठीक है. एक्चुअली इसका कुछ f नॉट है, कुछ रखना चाहिए था, बट डजंट मैटर, इट्स क्लियर. सो इन दोनों को कंबाइन करके अगर मैं लूँ स्टार एंड या 1 and 2 व्हाटएवर, 1 and 2 बाय 1 and 2, पहला वाला हिस्सा हमारा हो गया कि इनका नॉर्म, एंड इट प्रिजर्व्स नॉर्म. ये जो हम सोच रहे हैं द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ g विद fg, we are thinking of a correspondence in LP star to LQ, where 1 by p plus 1 by q is equal to 1, and we are seeing that this correspondence preserves norm via this action, via this, when I define it in this way. Actually ज़्यादा difficult portion होगा जब हमें दिखाना होगा हर कोई फंक्शन इसी टाइप का होता है for some f belonging to L2. ये तो होता ही है बाउंड्री लिनियर मैप जो हमने देखा, इजी है. अब दूसरे वाले में सिंपली हमें यूज करना होगा Holder's inequality. Now for Holder's inequality, okay, for 1 is less than equal to p is less than infinity, by Holder's inequality 1 और infinity वाला हमने सॉल्व कर लिया. f g of f जो है is equal to integral f g d mu, which by Holder's inequality is less than equal to f का norm p and g का norm q. So this is true for all f belonging to LP mu. It means that fg is a bounded linear operator. Yeah, it's bounded. Yeah, it's continuous. जो भी आप कहना चाहो, normal linear space में they are just used. No, all these words are used. Bounded linear map. And of course, by the same reasoning as before, fg is the infimum of these numbers, so it could be less than equal to norm gq. Now I'm going to reverse. So for that, with the help of this g, I can write f. f को अगर मैं मान लूं mod g raised to power q minus 1 into signum of q, मतलब बिल्कुल signum of g. Signum of g, and again I'm saying, I'm reiterating that by that I mean I'm defining f pointwise in this manner. Now since g is measurable, of course, it belongs to
LQ mu, तो पहले तो इसका measurable होना जरूरी है, तो it implies that f is measurable, क्योंकि इसका modulus measurable है तो उसका power measurable है, तो so that's it is just plus minus 1, इसमें तो इसी तरफ सिर्फ उसकी sign change होगी, है ना, जो signum part है, it is measurable and अगर मैं लूं mod f raised to power p, this would be mod g into signum of g whole raised to power p, and of course this would be mod g raised to power, मैंने थोड़ा गलत तो नहीं किया, हाँ यहाँ पे q minus 1 है, और सिग्नम चूंकि प्लस माइनस 1 है तो मॉडुलस में वो बन जाएगा of course plus 1, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, so it should be p into q minus 1, that is mod g raised to power q, because pq minus p is equal to q, because 1 by p plus 1 by q is supposed to be 1 in our theorem. तो अब चूंकि ये इंटीग्रेबल है, because I'm assuming I'm picking this g from LQ, so this is integrable, so which implies that f belongs to LP. ये जो मैंने g की मदद से ये फंक्शन डिफाइन की, where g belongs to LQ mu, it would give me a function that belongs to LP. So once I'm done, and how about norm? Norm, right, ठीक है, f belongs to LP mu, furthermore, and of course साथ में ये भी f into g जो है वो क्या होगा, it got g raised to power 3 minus 1 into signum of g multiplied by g. Now this is just mod of g, this is mod g raised to power q, so hence it follows that, follows क्या, it's मतलब इससे ये directly मिलेगा, f sub g at f in mod is equal to integral fg d mu, of course ये पहले से ही नॉन नेगेटिव है तो सो इसको मॉड लगाने की जरूरत नहीं है ना, मतलब मैं इसको मॉड हटा भी सकता था, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव है तो चलो ऐसे ही लिखते थे, which is equal to integral mod g raised to q d mu, बजाय मॉड हटा ही देते हैं क्योंकि इससे थोड़ा कंफ्यूजन होगा, because it is the definition of f इस तरह से. Okay, so fg of f is equal to this thing, but I can write this as mod g raised to power q d mu raised to power 1 by p plus 1 by q, because 1 by p plus 1 by q is equal to 1. Now I use that base are same powers are added, so it would be mod gq raised to power 1 by p multiplied by mod g raised to power q d mu raised to power 1 by q. अब यहाँ पे भी लेकिन लिख सकता हूँ जो मेरा प्रीवियस किया था कि mod g raised to power q is the same as mod f raised to power p, so I can write here integral mod f raised to power p d mu whole raised to power 1 by p into integral, चलो लिखते हैं gq d mu raised to power 1 by q, so it is f mod f raised p with norm into mod g q norm, which would imply that fg at f divided by norm of p, क्योंकि it's a linear map तो मैं इस नंबर से इसको डिवाइड कर सकता हूँ, provided it's not zero, क्योंकि जीरो के लिए तो ये भी जीरो हो जाएगा, so there is no problem. नहीं, just to make it, हालांकि किताब में ऐसे नहीं लिखा लेकिन मैं ऐसे ही तुम्हें बताने के लिए कर रहा हूँ. अब ये जो वेक्टर है ना इसका नॉर्म 1 है, पहले तो ये नॉन नेगेटिव है, आई कैन यूज इट्स मोड, चलो मैं लिख देता हूँ. ओके, तो नॉर्म ऑफ एफ जी जो है is equal to supremum over norm of f is equal to 1 mod of fg at f
which would be greater than equal to mod of fg at f by norm f. ये तो सभी f के लिए, हालांकि ये f और ये f, मतलब this is varying, this is fixed, तो मैं ऐसे लिखूंगा which is the same as fg, क्योंकि ये पॉजिटिव था पहले बार, ये हम वो वाली एग्जांपल ले रहे हैं जो यहाँ है f, right, which is equal to norm gq. So what does that mean? That means that norm fg is greater than equal to norm gq less than equal to हम दिखा चुके हैं, hence norm of fg is the same as norm of gq, and we are done. And we are done. तो लंबा है इसके बाद थ्योरम, उसका तो कभी कुछ होगा नहीं, क्योंकि अब हम इसका रिवर्स दिखाएंगे, उसमें काफी कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है, मेजर थ्योरी इन्वॉल्व है, बट हमें करना है। तो ये वन वाला साइड इजी था, यानी हमने दिखा दिया कि for every g belonging to LQ mu, I can find f sub g belonging to LP mu, oh sorry, star same bilkul, such that norm g is equal to norm fg. So this correspondence preserves norm. So either one side से हो गई, है ना? It is like a situation like LQ mu is contained in LP mu in a way, because it's not, है ना? मतलब मैं in a way कह रहा हूँ क्योंकि they are not the same, but as vectors and as, क्योंकि ये इस चीज को preserve करता है और ये linearity को भी eventually preserve करेगा जो हम दिखाएंगे. So as a subspace it would be there as a subspace. और जब हम इसका converse भी दिखाएंगे तो obviously तो ये बराबर हो जाएंगे. They can be identified as the same normal, same Banach spaces. So let's leave it there. वो वाला theorem हम कल करेंगे. Let me stop the share. Okay, let me end this meeting here.